बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, शबे असरा के दूल्हा पे दाइम दुरूद, नौशाहे बज़ में जन्नत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले पतस की पत्तियां, पतली पतली गुले पतस की पत्तियां, उन नबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया। अल-फातिहा। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व अर्सलनाका इला रहमतल लिल आलमीन। काना मुहम्मदुन नबा अहदिन मिन ज़ालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि खातमुन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद नबी व आलिहि वसल्लम तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया, सलातु वस्सलामु अलैका या ताजुल अंबिया। अस्सलामु अलैकुम या खुलफाए राशिदीन या अहले बैत या सदा सैयदना गौस आज़म या इलाहुल आलमीन। जाने में हमसे कोई भी खता गुनाह खता गलती हुई हो माफ़ फरमाना। बिलखसूस इस प्रोग्राम के मसले से या इसके ताल्लुक़ से हमने कोई भी खता गलती की हो, बेदबी गुस्ताखी अनजाने में जाने में क्या हो, या रब हमें माफ़ करना। या इलाहुल आलमीन हमारी हाज़िरी को कबूल और मकबूल फरमाना। जो भी जानी माली तौर पर जिन जिन लोगों ने जो भी खिदमत की, सबकी खिदमत को कबूल मकबूल फरमाना। या इलाहुल आलमीन जिन जिन लोगों ने नियाज़ में अमल किया है, उनकी नियाज़ को भी कबूल मकबूल फरमाना। या इलाहुल आलमीन दूर दराज से जिन लोगों ने सफ़र किया है, उनके सफ़र को कबूल मकबूल फरमाना। या अल्लाह आने वाले जो भी नाज़रीन होंगे, जो भी
ज़ायरीन होंगे या अल्लाह जो भी लोग आएंगे सबको शिफा कुल्ली अता फरमाना, सबको इन तबरुकात और मुक़द्दस आसार के सदक़े और तुफ़ैल और गैब से इमदाद और मदद फरमाना, सबकी तकलीफ़ों को परेशानियों को दूर फरमाना, सबको हर मर्ज़ तकलीफ़ से शिफा कुल्ली अता फरमाना। या इलाहुल आलमीन हाज़िरीन जितने भी लोग बिलखुसूस जो खादिम लोग जो है जो खिदमत करने वाले लोग हैं इनकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमाना, इनके बच्चों को शिफा कुल्ली अता फरमाना, इनके घर की परेशानियों को दूर फरमाना, इनके दुश्मनों के सर से इन्हें निजात दिलाना, दुश्मनों के सर से इनकी हिफाजत फरमाना। आमीन। या इलाहुल आलमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुल्फ़ मुबारक के सदक़े आपके मुक़द्दस के सदक़े और तुफ़ैल खुलफ़ाए राशिदीन के मुक़द्दस के सदक़े और तुफ़ैल नाले शरीफ और कदम मुबारक के सदक़े और तुफ़ैल या अल्लाह या इलाहुल आलमीन हमें ईमान की सलामती अता फरमा, पंजगाना नमाज़ी इबादतगार और नेक बना, हर रिज़्क़ से पाक और साफ़ फरमा, हर मोहताजी से गुमराही से गुमराहों से बचा, शैतान और शैतान के मगर फ़रेब से बचा, काफ़िरों से कुफ़र से महफूज फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारे घर की घर वालों की इज़्ज़त की आबरू की ईमान की अक़ीदे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हुए उनको गैब से रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो पढ़ाई करते हैं उनको पढ़ाई में कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह जो सफ़र पे जाने के उनके सफ़र को आसान और कामयाब फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्लल्लाहु मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिक़ुल वाहिदुल अमीन फल्लाहु खैरुल हाफ़िज़ व हुवा अर्हमुर राहिमीन रब्बिग़फिरली वरहम अन्ता खैरुर राहिमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है चलें बिस्मिल्लाह। वैसे लास्ट ईयर ये सब ग्रो हुए थे, everything here has grown from here. Subhanallah. Okay. Now, including this ring, including this here, this container, the container in the back. This bowl is the original sandal. So this bowl, this sandal has been changed. So the wax and the sandal here has been changed, and that's the original one. The original sandal has still got lots of Moinuddin shape inside. Lots of them. I can't even pick them out. I've picked some of them out. Okay, as you can see here. But there's many more inside. Okay, but it's very small, very fine, so I've left them in. This is also my Muqaddas Nabi sallallahu alaihi wasallam. ये हज़रत अली मुश्किल कुशा मौला कायनात मौला अली रज़ियल्लाहु ताला। ये ज़ुल्फ़ मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। अच्छा, let me come around. ये जो ज़ुल्फ़ मुबारक है जो आप देखेंगे इसके अंदर you will see inside here, right, the Zulf Mubarak. The Zulf Mubarak goes inside the other. देखते हैं? ये Zulf Mubarak जो है ना, दूर वालों ने नहीं देखा तो नज़दीक आ जाओ. It's important everybody sees this. ये Zulf Mubarak जो है अतर के अंदर जाता है. ठीक है, सब लोग देख लो. It's important you see this. Yeah. अच्छा आप ही ओके ठीक है, देख लिया सबने? The reason I wanted to show you that is because ये जो जब हम transport करते हैं ना तो so when I bought it from our residence to here, I normally transfer in here. Okay, so the Zulf Mubarak is kept inside here. I also empty all the Atar Sharif into this bottle. Okay, so that goes inside here, right? So to avoid any spillage. Okay, and I've put the same Atar in these bottles here to give out to everybody. So there should be one each here for everybody. I'll pass it on. और कितने?
हसन को दे। ये एक राना सबको दो। ये हो गया सब? नहीं मेरे पास है। दो है। और दिए ना उनको? अभी दे सबके पास है। ये सबने ले लिया। एक दे दो राना साहब के लिए। ठीक है? दोनों राइट, ठीक है। तो ये गुसल शरीफ हमने कर लिया था जुल्फ मुबारक को, ये गुसल शरीफ का पानी है। तो स्टार्ट हियर, एवरीबॉडी हैव अ सिप ऑफ दैट। ये ट्रे जो है ये गुसल शरीफ के लिए इस्तेमाल होती है। पानी गुसल शरीफ का है, गुसल शरीफ। जुल्फ मुबारक को कल गुसल दिया था मैं और मामू ने। जुल्फ मुबारक के गुसल शरीफ का पानी। इसी टाइम पे थोड़ा पोस्ट करना, पोस्ट कर लेने का, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें आप लोग और अतर मिक्स कर सकते हैं। दिस इज प्योर, लिटिल बिट इन देयर, बट दिस इज प्योर नीट। Okay, so if you want to add more water to it, distribute it to others, you're more than welcome. But this is pure. ठीक है? है ना? और ज़मज़म डाला ना? डाल दो जरा के। चलो एक मिनट डाल दो। डाल दो। You can, I've had some this kind of this. Okay, यहाँ पे अच्छा। 10 खुलफाए राशिदीन, 4th खुलफाए राशिदीन और अहले बैत हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला के मोइनुद्दीन से, ठीक है? ये आप लोग इत्मीनान से फिर ज़ियारत करना, सब लोग इत्मीनान से अपने अपने टाइम पे अपने अपने हिसाब से ज़ियारत करना। I'll explain everything first and then you can do your own ज़ियारत in your own time. Inshallah we'll have plenty of time for that. अच्छा, this has come from the shrine of Sarkar Sayyidina Maula Ali radiallahu ta'ala. So over there in the Mazar Sharif they use this to guide people. Okay, not like India, Pakistan where they थापा लगाते हैं ना, हाँ हो गया वो नहीं हो। या रोज़े को सफाई करके फिर इसे चेहरे पे लगाते हैं, चूमते हैं। तो वहाँ ऐसे डायरेक्ट इसे गाइड करने के लिए यूज़ होता है ज़्यादा, और कभी सफाई के लिए भी यूज़ होता है। तो हमारा मतलब हमारे दिल में बस ऐसे आया कि हमको बस ये तबरुक सरकार से ना अली मौला मुश्किल कुशा के तबरुक ये हमको लेके जाना है। तो हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, शिया हजरत है वैसे, इलेक्ट्रिसिटी से है, तो उनको हमने साथ रखा था। तो उसको हमने कहा कि ये उनके पास है, तू ले क्या, bring this from them. So he went and said something to them and they said something to him in their language, and then he was going out. I says, where are you going? तो कहता है कि I'm coming. तो मैं कहा, no, अभी जाने का टाइम हो जाएगा। He says, no, you come with me then. I says, we'll both get in trouble. What's the point? So he goes, no, come on, hurry up. तो फिर हम और वो बाजार में गए। तो मैंने कहा जा कहाँ रहे हैं क्या? तो he says, we have to buy one of these first. Give them the new one, then they will give us this one to replace this. अब उस वक्त हमारे दिल में ऐसा हुआ कि ये शिया लोगों का यूज़ किया हुआ, वो मतलब जो है अच्छा भी नहीं लगता कि शिया लोगों का जो है सरकार at the time in each 4 corners of the darbar. We found a black one. Okay, we couldn't find a white one, so we took the black one back, and then they said something again to each other. He took it inside a room. Now the Sarkar Sayyidina Ghaus Azam's room, Ali Sharif Khuda's room is this one side is for ladies, this side is for men, and on this side there's like a room directly touching the Mazar Sharif itself. The things they use for the cleaning and maintenance of the darbar are normally kept inside this room. Okay, so he went inside the room. He was gone for a few moments, and he came back with this. And he said to me that I've put your one there, and I brought this one back. तो माशाल्लाह देखो कोई नहीं जानता था, अली ने मेरे बात दिल की बात समझ ली कि भाई इसको इनका इस्तेमाल किया हुआ नहीं चाहिए, तो अंदर से ताज़ा नया हमको दिया. This is why this has got this हमने. So if anybody says, oh well, it looks new, it doesn't look like it's from the bazaar, it's new because it is new.
But it's been inside the room for Allah knows best how long. Directly touching the mazar of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala. तो बस हमारे दिल की वो ख्वाहिश थी तो अली शेर खुदा ने हमको वहाँ का तबरुक भी दिया और न्यू उनका इस्तेमाल किया हुआ नहीं है न्यू है ठीक है बल्कि इसको यहाँ रख देते हैं राइट अब ये सरकार सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार जबा मुबारक का पीस है तो this is from a full piece. A friend of mine in Bombay, Pir Mahmood Ali Sahab, gave me this piece and this piece. This is Hazrat Imam Hussain. This is Hazrat Imam Ali Sharifullah radiallahu ta'ala. This is the picture of the full piece, full Jabba Mubarak of Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala. When we first did Ziarat, the first time I did Ziarat of this Jabba Mubarak, the Priest told us only in the month of Muharram, the Jabba Mubarak goes fresh with blood. Right? That doesn't mean this is the Jabba Mubarak Sarkar wo at the time of Shahada, right? But as you know, as you people may have heard, there's blood coming from stones, there's blood coming from tasbihs that have nisbat to Sarkar Sayyidina Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala. So this is the Jabba Mubarak, Behran Sharif worn by Hazrat Imam Hussain radiallahu ta'ala. So this all this here was fresh. When we did Ziyarat, it was fresh, and he said it's the first time ever in your presence. Never has this been fresh. Only in the time of Muharram, it goes fresh. And the blood, this is all dry at the moment in the picture. And this will all go fresh. Watery, matlab, fresh order. Okay? So the amazing thing about these Jabba Mubarak is the Jabba Mubarak. I've also noticed that with the Nalen Sharif. Nalen Sharifs come from the same place. Take your time later to have a look at all the certificates as well. So the unique thing about these are that they all have their unique fragrance. All of them have their unique fragrance. Mamu has witnessed this yesterday. I put a lot of Atar Sharif on that, lots of Atar Sharif on it. And I do it on a regular basis. I'm not the type of person that will do it once a year. I do it regularly. But doesn't matter how much Atar Sharif you put on there, it will always go back to its original scent, original fragrance. The fragrance possibly of Hazrat Imam Hussain or the time when they were wearing the Jabba Sharif. Whether it's this or whether it's that, always will be the same fragrance. Yesterday we put oud and musk. Oud and musk, but it doesn't matter what fragrance you put on there. In fact, if you check it now, it will be completely different. And you check it again after a year if you wish. You'll always get the same fragrance from it. This is table number 4, by the way, cameraman. So in the same way, everything will have its own unique fragrance. This is a Jabba Mubarak of Hazrat Ali radiallahu ta'ala. It doesn't matter how much you put fragrance on there, it will always come back to its original same fragrance. Now I know I don't even have to check it before I show you, because I know I've checked it many times. Always, doesn't matter how much Atar Sharif you put on there, always will come back to its original fragrance. And the amazing thing is, when I was in India, I said to the Sayyed Sahab, I said, Sayyed Sahab, which Atar Sharif have you used on the Behran Sharif of Hazrat Ali? Which Atar Sharif have you used on the Nalen Sharif? Which Atar Sharif have you used on Hazrat Imam Hussein's Mazar Behran Sharif? Because it's very, very nice and I want the same fragrance. And he says, Hina Mushka, I put the same Atar on all of them. But they always smell different. Obviously, it's more difficult for us here. I use whatever Atar Sharif is available at the time. This is homemade, by the way. At the moment I'm using this. This is homemade Hina Mushk, homemade. He makes this himself. What you have been given is also Hina Mushk. Okay. This is in the time of Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam. They so many hundred of years ago, they used to 1400 years. What they used to do is use a kela plant for as a toothpick. So they used to pick the
when it used to dry up, they used to pick the end of the plant, and it used to be like this, and they used to use that as a toothpick. Now, I don't know that much history about this because it was given to me second hand, so it hasn't come from the original source, it's come from another person that gave it to them. So I've been told that this is from, because you can collect seeds, see there's a seed there. You can collect the seeds from it, that's a seed there. So you can collect the seeds from this. And I was told that from one of the original toothpicks, somebody collected the seeds, planted it, and then this is from the original plant. Okay, so that's that. This again, it was given to me. Take your time to read the certificates later by the Sayyed. वो bowl को फिर क्या हुआ कि शहीद हो गया फिर for the second time, right? It cracked again. So then what they did was they crushed it, mixed more cement, and tried to rebuild it again. They rebuilt it again. It was shahid again. It broke again. For the third time, he changed hands then, he went to somebody else, he bought all the pieces, and then what he did was he crushed it again. He added green color to it, that's why it's green. And then he rebuilt it again. It cracked again, okay? Now, Allah knows best, you know, some things are just best left as they are. And this is one of those things. And imagine if it was a whole piece, I probably wouldn't have had it, okay? So that's probably why. There's ashik of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam everywhere, collectors everywhere, and maybe that's why it needed to be in pieces. But one of the amazing things about this bowl sharif is the color. The last time it was tried to be rebuilt or remade was about 8 or 9 years ago. Okay, now since then nobody's touched it. But since then, in that sense, to try and rebuild it or add color to it. But since then, it has had ghusl sharif many times. It has had water, atar added to it many times. For at least a year, nobody's done ghusl and nobody's added any atar. Okay, but it's fresh every single time. The color doesn't dry up, and it's cement. You can imagine the cement, you know, and sand or whatever it is, you know, but it stays fresh. So not only nobody can rebuild it, it doesn't even dry up, it stays fresh. Right, this was given to me in Lahore, Pakistan. So this is the actual piece of Gumbaj, okay, actual piece of Gumbaj Sharif. We have the color here, the color used on the Gumbaj Sharif. This is the white piece, you know, the top piece is here, mashallah, we've got it here. So see this white piece here. The white bit, this is a piece from the white bit, okay, and this is actual Hara Gumbaj, the actual piece. So you know those, you know the paint when it flakes off. It's that actual paint that flakes off, and this has come from Lahore, Pakistan. All right. ये मोइन मुबारक सरकार सेना गौसे आज़म, मोइन मुबारक शरीफ गौसे आज़म, इसमें है संडल मुबारक from the रोज़ा of सरकार सेना गौसे आज़म table 5. ठीक है, ये हज़रत मौला अली के कदम मुबारक का नक्श है. So in Bombay, he's got the original footprint of Sarkar Sayyidina Maula Ali radiallahu ta'ala on stone. This is a cast from the original. Without any lining inside, paper inside, gilaf inside, directly taken from that. So this all is brown here is the sandal and the atar sharif that was on the actual Qadam Mubarak at the time. So this is original mold cast of the original Qadam Mubarak of Hazrat Maula Ali. Not a copy or a second copy, is from the original. ठीक है? आ जाओ सब लोग ये रूम में आ जाओ. आ जाओ इधर. Come this way, brother. आप इधर आ जाओ सब लोग. हाँ, टेबल नंबर 8. तो यहाँ पे मुख्तलिफ अलग अलग ये जो है पहले सबसे पहले काबे शरीफ के गिलाफ है. तो इसमें से 2 जो गिलाफ है ये हमको सूफ़ी साहब ने अता करे थे. सूफ़ी नज़ीर लंदन से आए हैं और ये अभी ये लेके आए हमारी ज़ियारत के लिए. ये कंदील शरीफ, काबे शरीफ का कंदील शरीफ या हय्यू या कय्यूम जो लिखा है, ये भी अभी हमारी ज़ियारत के लिए सबके लिए लेके आए.
इसमें आप देखेंगे कि काबे शरीफ के अंदर हरा गिलाफ होता है, this green गिलाफ inside the Kaaba. So this is a red version of that same thing, okay? And this is Medina Sharif, Sarkar Nabi Sarkana Sallallahu Alaihi Wasallam, Roza Mubarak. Also another little piece somebody gave me of a gilaf that has been inside the Roza of Nabi Sarkana Sallallahu Alaihi Wasallam. This Pasina Mubarak collection here. Now all of this here in the crystal bottles was given to me by a person in Bombay. The certificate for that is over there on table 9. Okay. The purple crystal bottle is also the original that was given to me. आपको जो दिया था वो भी original है. Okay. I've mixed it since. All of these bottles are pure. What I gave you is also pure. Okay. Now ये जो है ना, the history behind this is for those of you that want to read इस पे लिखा है actually. Salim अपने रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी मुबारक थी, वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुल्ला करने जाते थे, आराम फरमाने जाते थे. आप चमड़े का बिस्तर बिछा देते थे, उस पे आप आराम फरमाते थे. उसके बाद आप जो है फरमाती है कि मोतियों की तरह आपके जिस्म मुबारक से, जिस्म अथार से मोतियों की तरह पसीना छलकता था, तो वो क्या है वो आप जमा कर लेती थी. सरकार ने एक बार पूछा तो आपने कहा कि हम इसको जमा करके इसमें खुशबू लगाती है और फिर हम खुद इस्तेमाल करती हैं, लोगों में तकसीम भी करती हैं. और आपके बेटे ने तो बाद में वसीहत भी लिखी थी कि हमारे कफन दफन पे भी ये लगाया जाए पसीना मुबारक. So that's proof in enough that nothing like that is bid'at or shirk or anything like that, first and foremost. And also it proves that these kind of relics are available. The Sahabas did used to collect them. Okay. Now this was given to me by a third person. It's been mixed and diluted many times. So this green bottle, this has been mixed with very very expensive oud. These are the original. I've been told that the fragrance that was mixed by the Sahabi or the Ahl Bayt or the Salihin or Tabein, Tabein. After that, nobody else has added to them. Okay, nobody else has added to them. इसमें किसी और ने अतर मिलाया नहीं. ये तो मिक्स किया हुआ है. अभी भी लोग मिक्स करते हैं, लोगों में तकसीम करते हैं, मिक्स करते हैं. हमने भी एक शीशी घर पे रखी है, उसमें हम भी ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, लोगों में तकसीम करते हैं. ठीक है, आपको दिया है वो प्योर है, मगर हम लोगों में भी जो तकसीम करते हैं तो एक अलग से हमने यानी I was given this in a plastic bottle. Okay, so when it came in a plastic bottle, I transferred everything into these crystal bottles. When I transferred everything into the crystal bottles, I left this much in the plastic bottle. The plastic bottle was this big, and I left this much in the plastic bottle, and I filled it up again, and then I used that to give other people. Now, when I was transferring from the plastic bottle to the crystal bottles, I used this gilaf. This gilaf is from Hazrat Sayyidina Qutbuddin Bakhtiyar Kaki Rahmatullah Ta'ala in Delhi. So I don't know if you guys can smell that already, but I did some to it as well. I put some water on it, Pasina Mubarak, and obviously while I was transferring, while I was cleaning the bottles, because don't forget I bought it from India, so the bottle had leaked slightly. The lid and the stopper had Atar Sharif on it, Pasina Mubarak on it. So I cleaned all that using the same gilaf. I also applied some to it and also used it when transferring into crystal bottles. So you'll be able to see. One of the reasons I kept it as it is with the Pasina Mubarak is because a few people asked me, we want to use some Atar, we want to apply some Atar, we want some Pasina Mubarak, we want to know how it smells. So now inshallah everybody will be able to. Yeah, pass that on. Inshallah next time Pasina Mubarak bhi sabke liye rakhenge. हो गया है जी जी. हाँ तो थोड़ा रश का है.
हाँ साहब आप महरूम ना होना अभी हाँ बस आएगा चलो थोड़ा रश करके अब है टाइम राणा साहब को दे राणा साहब को दे This has only come this year from India. वहाँ पे हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खाक रोज़े पाक की खाक है. ये 11 इमाम 12 खुलफा जिसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, जो better known today as the 12 imams. Imam Mahdi being the 12th, Hazrat Imam Ali being the first. So this is khak from 1 to 11. Okay, so take your time later. This was given to me by somebody that bought this from Ud Sharif in Pakistan. I've been told, I don't know that much history about it, I've been told it's come from Hazrat Imam Naqi's family. Somebody passed it on, Hazrat Imam Naqi had it, he passed it on to his family, and generation after generation it's come down. And this is a piece of Safa Mubarak of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And you can see it's quite aged, it's quite zaif, okay? Like I said, I don't know that much history about it, but I've been told it's a piece of Safa Mubarak of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ये लुआब धन और पसीना मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है. This was given to me by Sufi Nazir sahab, and possibly been diluted. It's not original, it's been diluted, but मतलब originally समझो ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब धन कुएं में डाला तो पूरे कुएं में शिफा हो गई. तो आजमाया भी है हमने, आजमाना है तो क्या, मगर समझो कि बीमारियों के वक्त पे हमने इस्तेमाल भी किया है. हमारी वालदा भी जब बीमार थी उन्होंने भी इस्तेमाल किया तो माशाल्लाह काफ़ी शिफायाब हुए. तो मतलब I can tell you for sure this is genuine. Okay, so this was given to me by Sufi Sahab. I put only a couple of drops of that, both of them, just a drop, maybe less than drop even, maybe minute amount in Zamzam, and put it in this bottle. And it became so sweet, so sweet. So even just not even a drop, less than a drop, and it becomes so sweet. That's Pasina Mubarak again, certificate there. ठीक है, राइट. बाकी सब तो आप लोग समझ लेना क्या क्या है. ये एक खास चीज़ यहाँ बताने हैं. यहाँ आ जाते, चलो यहाँ अंदर बता देते हैं. चेक. अच्छा, ये जो है Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had 24 letters that he wrote or had written. Okay, this is a copy of one of them. Now the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ne ispe apna dasta mubarak lagaya tha, the handprint. Okay, now there's about 6 letters that have got Mohr Nabuwat, and the rest of them had handprints. Some of, at least 6 of them. Sorry, 6 of them had handprints, and most of them had the Mohr Nabuwat. Okay. Now the most beautiful thing about this is only a copy because it was a bit difficult for me and to bring the original or the first copy, and obviously due to limited amount of space we have here, I couldn't bring that one. I did want to bring it. I did want everybody to do Ziarat, but the most beautiful thing about it is the one I have at home is the original length and width of the original document. Okay, it's a true first copy. And it's the original length and original width, which means even though it's a copy, it gives you an idea of the handprint size of the Dasta Mubarak of Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam. So at the time, obviously due to age or depending on age, the handprint would have changed. The size of the hand Dasta Mubarak Sallallahu Alaihi Wasallam would have changed. But at the time of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam putting his Dasta Mubarak on that document, we have the exact size, same size. But this I bought mainly for Ziarat, but also awareness how Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had a covenant, a tahreed with the Christians to provide them security and give them their rights, give them women their rights, give them access to their churches, give them permission to build churches. All of these rights were given to them. There's a translation, a short translation,
And underneath that is other documents that will give you the full translation and breakdown of all of this. Now, from my research, because this is I haven't had a lot of time, but from my research, I've been advised that up until about here it was written by Hazrat Ali, and then it was written by somebody else further down. The Khulafa Rashidin, you could see the names there actually. The Khulafa Rashidin and other Sahabi radiallahu ta'ala also put their names there and signed it to acknowledge it. Okay. And over here in this area, even though it's not very clear on this copy, over here in this area is something here written in acknowledgement by Hazrat Usman Ghadi radiallahu ta'ala, and a stamp by Hazrat Usman Ghadi radiallahu ta'ala. Okay? Allah. ठीक है, तब बाकी सब तो अच्छा, चलो ये एक चीज़ हम बता देते हैं. ओह बिस्मिल्लाह. आगे सब लोग. अच्छा, तो some of the things are self-explanatory here, so I won't explain everything. But this is Hazrat Bibi Jawindi radiallahu ta'ala, and she is the great granddaughter of Maghdum Ashraf Janki Simran radiallahu ta'ala. Saqib will know all about this. He carried this for me at the Astana through the coach, and this is one of those items I was talking about. Even the Pakistani government don't allow anybody to take any relics from there because they're trying to rebuild it, and it's under a historical site. It's known as a historical site, protected by the government and a trust. So nobody's really allowed to take anything from there. But the Khadims and the head of the family, the Sayyed family of Maghdum Pak's children, gave this to themselves. This here is a gilaf of Hazrat Imam Zainul Abidin. Now, in the olden days, obviously, they used to put gilafs over the Mazar Paks of all the Ahl Bayt and all the Sahabi. These days, you can't even recognize who's who. But this is a piece from a very old gilaf. This here is a piece of carpet from Hazrat Abdul Jabbar radiallahu ta'ala, who is the son of Sarkar, one of the sons of Sarkar Sayyid Abbas Azam. There's a piece in there as well. This was given to me also in Baghdad Sharif, and basically they've taken the carpet out and they've covered it with marble now. So it's marble inside, there's no carpet inside. This is the old carpet that was taken out. And they've still kept it in the storage below the Astana. So everything's still kept there. They keep everything. The crystals you saw earlier over there, the dome, everything is preserved. Everything is kept. They don't shaheed anything or put anything in the sea or the ocean or the river like the Saudis do. They keep everything. So this is a piece of carpet from there. Junaid al-Baghdadi radiallahu ta'ala, Hazrat Khaja Dana Sahib, Surat, India, Hazrat Paigambar Yusha alayhi salam, Hazrat Behlul Dana. Behlul Dana, for those of you who don't remember, is the Sahabi that made the heavens in sand. Mahal bana rahe the sand mein, aur matlab wo Basha ko kaha ki bhai kharidna ho to ek dinar mein, to he said no, what's this, you can't make heaven and you can't make mahals in the sand. And then his wife came and she says, I'll buy it. So she bought it for 1 dinar. Later on, the Basha Rashid had a dream, and in the dream he seen a very big mahal in the heavens, and he tried to enter because he seen his wife's name on it. So he tried to enter, and the security stopped him and says, you're not allowed in. And he says, well, why not? Because it's my wife's house. He says, yeah, but you're not allowed. This is for your wife only. So then in the morning when you got up, he quickly rushed to the fakir in the forest, in the jungle. And he's seen him there. He says, oh, I want to buy a mahal of you. And he says, 1 million dinar. He says, how can it be 1 million dinar? Only yesterday it was 1 dinar. He says, yesterday you hadn't seen it. Today you've seen it. So it's more, the price gone up. Value goes up after you see something. So that's Behrul Dana. That's the glass from the inside of the dome of Behrul Dana's bazaar in Baghdad, Iraq. ठीक है. The other things मुख्तलिफ अलग-अलग दूसरी चीज़ें हैं. आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से ज़ियारत करें सब लोग इत्मीनान से. और दरवाज़ा खोल दो, अब 10 तो बजे ही है ना. दरवाज़ा खोल दो. This is long time I think. 10 हो गया शायद. नहीं हुआ. 10 हो गया. 10:10 होने वाले. इनका इंट्रोडक्शन करो. हाँ, ये सूफी नज़ीर साहब हमारे बहुत ही अजीज़, हम
बड़ी मोहब्बत करते हैं इनके साथ। ये माशाल्लाह जब भी हम कहते हैं हमारे साथ बड़ा तावन करते हैं, आते हैं प्रोग्रामों में। और ये लंदन से आए हैं। कौन सा एरिया लंदन? वुड ग्रीन लंदन से आए हैं। तो माशाल्लाह ये ख़ुद भी बहुत तबरुकात रखते हैं, बहुत मोहब्बती है, बड़ी खिदमत करते हैं लोगों की, इलाज भी करते हैं, ख़ुद खलीफा भी है और मतलब इलाज करते हैं, दूर दराज लोगों के पास जाते हैं, उनकी खिदमत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। माशाल्लाह बड़ा काम है इनका, बड़ी इनकी खिदमत है। अल्लाह ताला इनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी हर जायज़ मुराद पूरी फरमाए, इनके बच्चों को शिफाए कुल अता फरमाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। हम यहाँ आए थे, सब साथ में आए जी। ये लेबल यहाँ किसने लगाया? यार इसने आपने लगाया ना, हमने नहीं टच करा। नहीं देखो ये तावीज़ किसका है? 11वीं वाले पीर का। ठीक, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा नहीं है, वैसे ही 11वीं वाले पीर आज़म का हाथ का लिखा हुआ तावीज़ का कॉपी है। It's only a copy, but I've kept it here for awareness of people. There's a hadith mubarak here as well that shows the legitimacy of using tawiz. मैं फ्रेम नहीं पढ़ा। ना कोई गल नहीं, कोई नहीं, उन्हें दसने ने वो 11वीं शरीफ ना 11 नंबर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक हो गया नहीं बराबर आएगी तो 11वीं ने रखा 11 नंबर रखी हुई है, खुद ही आ गया। आप पी साहब ही फरमाए जी जी मैं नहीं कहता, सही बात। ये चीज़ ये साफ लिखा ही नहीं है। सब हज़रत उस्मान का सबियत ये साफ रखे सारे। अच्छा जी जी जी, ये हमारे बिल्कुल करीब करीब का रिश्तेदार है और इसने 4 किताबें लाई और एक किताब अभी भी फिलहाल इंडिया और पाकिस्तान में इस्तेमाल हो गई दारुल उलूम मदरसे में। वो लोग भी नहीं देखते किसका कहते, बस वो सूफी साहब का नाम लेकर वो इस्तेमाल करते रहते। वो एक किताब तैयार नहीं था, मैं लाने वाला था आज किताब, वो जिसके पास से वो कहता देंगे अभी तक नहीं दिया है। हाँ ये बताओ Where did you get this from, Uncle? Pakistan. From Pakistan. Oh, okay. This is Sufi. I don't know what it is. It's Niaz, is it not? Yeah, I think they're saying there's one in every room. Yeah. Bismillah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या अशरफुल अंबिया। आज हमने यहाँ ज़ियारत मुक़द्दस का प्रोग्राम रखा है। यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक शरीफ, आपके जुल्फ़ मुबारक शरीफ, आपका कदम मुबारक और बेशुमार अहले बैत और खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा इकराम, औलिया इकराम के तबरुकात है। काबा शरीफ के गिलाफ मदीना शरीफ के तबरुकात है। तो ये हम लगभग कुछ सालों से सालाना प्रोग्राम करते हैं। अभी कई सालों से हम मतलब सिर्फ फैमिली में करते थे, अभी 2 साल से कम हम जो है आम प्रोग्राम करते हैं, जहाँ मतलब बेशुमार यहाँ आज अप्रोक्सीमेटली 111 तबरुकात है यहाँ, बल्कि जगह छोटी पड़ती है। तबरुकात हमारे पास बेशुमार है। कुछ हमारी फैमिली में हमको अता हुए हैं, कुछ बगदाद से आए हैं, कुछ पाकिस्तान से आए हैं, कुछ इंडिया बॉम्बे से आए हैं, कुछ तुर्की से आए हैं। और ये सब हजरात यहाँ खादिम की तौर पे हेल्प करना है। और बस हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला सबको तौफीक भी दे कि इन मुक़द्दस तबरुकात की ज़ियारत करें और इनसे फैज़ हासिल करें, बरक़ात हासिल करें। और इंशाअल्लाह ख़ास तौर पे जो भी हज़रात आए हैं, जिन लोगों ने जिस तरीके से भी तावन किया है, अल्लाह ताला उनकी सबकी खिदमत को कबूल फरमाए। आमीन आमीन।
Fatiha. إن الله وملائكته يصلون على النبي آمين. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم صلى عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Please everybody go to your post. We have visitors already. क्यों दिलड़ी उदास गनेरिए ऐ सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजाते ऐ सूरत शाला पेश नजर वक्त नजाते रोज़े अशर विच कबर ते पुल थी जद हो सी गुजर सप खोटियां थी संतद खरियां सुबहान अल्लाह माजमल का सुबहान अल्लाह माजमल का माकमल का माकमल का मोहम्मद चले सूए अर्श आज़म अदमद चले सूए अर्श आज़म अदब से राज़ों को अहमद की मंज़िल बता दे Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah